Good afternoon, guys. This is Professor Mane. I am taking your management subject. Okay. Now we will start our next lecture for this first unit. Actually, in previous lecture we have covered the characteristics. The concept of management. We have covered some topics like concept of management, definitions of management, then characteristics of management. Then we have covered the levels of management. Okay, so in levels of management there are 3 to 4 levels of management. So first one is top level management, second one is middle level management, third one is your first level management. Okay, so then we have covered the basic difference between administration and management. So first, what do we mean by administration? Whether administration concept is similar to the management or it is different. If it is different, then in which manner it is different. So we have covered all these topics. So as we know that this administration, it is a different process as compared to management. Actually, management is what? Management is, it is nothing but things to be done through people. But administration is what? It is a process which include 4 to 5 steps. Okay, as we have discussed these 4 to 5 steps in your previous lecture. Means what? First one is planning, then organizing, directing, commanding, controlling. Okay, these are the 5 to 4 elements of this administration. So in previous lecture we have covered the concept of administration and what is the basic difference between administration and management. Okay, so now we will see in this lecture we will see the next topic. The next topic is what? Frederick Taylor's scientific method. Okay, as we know that the different definitions which have been discussed or given by different scientists, in which the one of the most important scientific method which is given by scientist F.W. Taylor. Okay, so we will see or we will discuss this Frederick Taylor's scientific method. So as we know that in our first or second lecture we have discussed different approaches. Okay, different approaches of management. So first one was actually in these approaches we have seen or we have studied the scientific method approach. So as we know that scientific method approach is what? In scientific method approach we will use scientific methods or established rules or principles to achieve our goals. Okay, so by using these scientific methods or basic or standard rules and policies, we will implement our strategic plan to achieve our goals. Okay, now we will see what are these scientific methods. So one of these one is which is given by F.W. Taylor. Okay, the scientist Frederick Taylor has given one scientific method, and which is most important method which can be applied by various companies or organizations to achieve their objectives or goals. Okay, so we will see this Frederick Taylor's scientific method. So as we this scientist adopted a different approach by introducing a step-by-step method to determine best practices or the one best way in performing a job and thereby establishing the proper pay rates for the job. So actually F.W. Taylor has suggested that there should be a one best way. Okay, there should be a one best way in an organization to achieve or to increase the productivity of the organization. So actually होता क्या है actually organizations में जो employees होते हैं, अगर उनकी productivity increase हो जाती है तो automatically organization की productivity increase होगी. So actually क्या हुआ था? Taylor published a book. So in that time he has published the book The Principles of Scientific Management, and in which he explained his techniques. Okay, he explained his techniques and these techniques were adopted to improve. Actually he has given some technical concepts or techniques to increase or to improve the productivity of employees at Bethlehem Steel, which is one of the
one of the known organization. In this organization, he has applied his techniques to improve the productivity of employees. Okay, and his techniques proved to be a great success. Actually, at that time, due to his techniques, the productivity of employees as well as the productivity of this organization is increased, and as a result, Taylor becomes a recognized as the founder of work study movement. Okay, actually Taylor has given some techniques to improve the productivity of the employees as well as productivity of the organization, and by using these techniques, this company, which company? Bethlehem Steel. This is the company in which he applied his techniques, and by using these techniques, actually company's growth or company's achievement or company's productivity is increased that time, so that he become a founder of the work study movement, or he is called to be a father of management science theory. Okay, so according to Taylor, the majority of workers put minimal efforts into their work if they knew they could easily get away with it. So as he thought that majority of workers क्या करते हैं, वो उनका कम से कम एफर्ट्स उनके काम में लगाते हैं. एक्चुअली उसकी वजह से क्या होता है, वो एफर्ट्स कम लगाते हैं. सो एफर्ट्स कम लगाते हैं, इसकी वजह से क्या होता है कि उनका जो प्रोडक्शन रेट है वो प्रोडक्शन रेट कम हो जाता है. उनके कम एफर्ट की वजह से जो कंपनी का प्रोडक्शन रेट होता है, जो एक्चुअली उनको टारगेट रहता होगा, उनको टारगेट सपोज इफ द टारगेट फॉर दिस कंपनी फॉर वन डे इज सपोज 1000 प्रोडक्ट्स, बट इफ द एम्प्लॉइज are putting the minimal efforts into their work, then this target cannot be achieved. Okay, so this thing noted by this scientist Taylor. Okay, so now then what happened, he referred to this mode of behavior as a soldering, and he attributed this problem with mismanagement of the work at the lowest level of organization. So actually हुआ क्या उस टाइम, जो सुपरवाइजर्स रहते हैं, जो फोरमैन रहते हैं, उनको एक्चुअली दे शुड इन्वॉल्व इनटू द वर्क ऑफ दिस एम्प्लॉयज. लाइक ओके, सो दे शुड फोकस ऑन द और दे शुड सुपरवाइज इन अ वेरियस प्रॉपर वेज on the employees, or they should control the employees performance, but this has not been achieved by this lowest level management. So the problems will be arised at lowest level management. So हुआ क्या, वो mismanagement lowest level पे हो गया. तो actually due to this, a lack of proper organization manifested itself in the lack of productivity. Due to this mismanagement at the lowest level, the productivity of this employee is decreased, as well as due to the decreased productivity of this employee, the productivity of organization is also decreased. Okay, then at that time what happened, it was a common practice in the industrial organizations that managers adjust the payments of these employees. Okay, managers कैसे एडजस्ट करते थे उस एम्प्लॉयज़ का पेमेंट एट दैट टाइम. आपका अगर मान लो प्रोडक्शन रेट पर डे पर एम्प्लॉय मान लो 10 प्रोडक्ट्स है, अगर 10 प्रोडक्ट्स की वजह से 10 प्रोडक्ट के बदले उस एम्प्लॉय ने अगर उसकी प्रोडक्टिविटी 7 प्रोडक्ट्स को निकाल सकता है, तो वो क्या करेगा, तो अकॉर्डिंग टू 7 प्रोडक्ट्स वो उन्हें पे आउट देगा. इट मीन्स व्हाट, उसकी वजह से फिक्स क्या हो गया कि चलो मान लो कि मैं अगर 7 प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन कर लेता हूँ at plant, if we produce 7 products, if I produce 7 products in one day, then according to this 7 products I will get the money for this day. But अगर वहाँ पे कोई एक एम्प्लॉई है, उसकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है, मतलब वो एम्प्लॉई अगर लेथ मशीन पे 10 प्रोडक्ट्स की जगह वो 15 प्रोडक्ट्स निकाल रहा है, तो अकॉर्डिंग टू दिस हिज प्रोडक्टिविटी ही विल गेट हिज मनी फॉर दिस डे. सो यहाँ से क्या पता चल गया, सो फ्रॉम दिस टेलर कम्स टू नो दैट
what is the best practice, okay, or what is the best practice which should be implemented in a day for these all employees. So मान ले actually if we consider there are 10 employees and the average productivity rate is equal to suppose 8 products per employee, but उस 10 प्रोडक्ट में से 10 एम्प्लॉयज़ में से 2 एम्प्लॉय ऐसे कि उनकी प्रोडक्टिविटी 15 प्रोडक्ट्स पर डे है और 4 एम्प्लॉय ऐसे कि उनकी प्रोडक्टिविटी 7 प्रोडक्ट्स पर डे है, लेकिन एवरेज कितना आता है 10 प्रोडक्ट पर डे. सो वहाँ से टेलर्स को ये पता चला कि जिसकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है, जिस एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी और जो एम्प्लॉय सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा है दिन में, वो उसकी मेथड कैसे है, वो कैसे प्रैक्टिस कर रहा है दिन भर में, कि दिन भर में वो कौन सी अलग मेथड अप्लाई कर रहा है, और जो 7 प्रोडक्ट्स वाला बंदा है वो कैसे अप्लाई कर रहा है. तो वो चेक किया उन्होंने वो चेक किया. सो इसकी वजह से उन्होंने क्या फाइंड आउट किया कि बेस्ट प्रैक्टिस और बेस्ट पॉसिबल वे टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी, वो मेथड कौन सी है, और अगर वही मेथड मैं हर एक एम्प्लॉय के ऊपर अप्लाई करता हूँ तो ही मेरी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी. ओके, सो ही सजेस्टेड दैट यू शुड फाइंड आउट फर्स्ट द बेस्ट पॉसिबल वे टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ एम्प्लॉयज. ओके, so this means that an increase in production brought down the pay rate. उन्होंने एक बेस्ट पॉसिबल वे फाइंड आउट किया. ओके, सो टेलर adopted a different approaches by introducing a step by step method to determine the best practices or one best way. ओके, सो इससे क्या पता चलता है कि उन्होंने ऑब्जर्वेशन किया कि किस एम्प्लॉयज़ की प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है और वो कौन सी मेथड वहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं. सो देन दे विल कम टू नो और कम इनटू कंक्लूजन दैट there is a one best way or one best practice in the organization, and by using this one best way or one best practice we can increase the productivity of that employees and also the productivity of organization. Okay, so Taylor's scientific method was a great influence to industrial companies and it completely revolutionized the organization of work in industrial organization. Okay, so Taylor's methodological approach to determine, now वो methodology क्या है to determine the best way or best practice of that employee. अगर 10 एम्प्लॉयज़ है, 10 में से अगर 2 एम्प्लॉयज़ 15 प्रोडक्ट्स पर डे प्रोडक्शन दे रहे हैं और बाकी के 8 एम्प्लॉयज़ 8 प्रोडक्ट्स पर डे का प्रोडक्शन दे रहे हैं. सो हाउ टू डिसाइड which one is best one or which one is the best practice or which one is the best way to increase the productivity. So he has considered the following steps to determine the best way, one best way to perform a job, and which consists of following 4 to 5 steps to determine the one best possible way or one best practice. He has given some steps to find out this one best way or one best practice. Okay, so first one is what? Select a sample of skilled workers and carefully study the job being done. Okay, so out of these 10 workers, as we know that there are 3 to 4 workers are there who has done their works efficiently. So select these workers or skilled workers and carefully study the job being done by them. So next step is what? Carefully list each operation including extensive detail on each task being performed. Okay, so carefully list down each operation which is done by this skilled person. So first we need to choose the skilled person, then we need to carefully observe the operations which is made by that skilled person. Then third step is what? Utilize a stopwatch to time each task being performed. Repeat this step over a period of time to obtain an average of time it takes to perform each task. It means what? एक stopwatch का यूज़ करो.
उससे क्या पता चलेगा कि हर ऑपरेशन के लिए वो स्किल्ड एम्प्लॉय है उसको कितना टाइम लगता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ देर इज अ लेथ मशीन, इफ सपोज फॉर ए स्किल्ड पर्सन फॉर टर्निंग ऑपरेशन ही टेक्स 1 मिनट, फॉर थ्रेडिंग ऑपरेशन ही टेक्स 7 मिनट्स। सो ऐसे स्टैंडर्ड वो स्किल्ड एम्प्लॉयज के थ्रू एक स्टैंडर्ड टाइम बनाओ कि टर्निंग के लिए एक बंदे को 1 मिनट लगेगा, थ्रेडिंग के लिए एक बंदे को 7 मिनट्स लगेंगे, ओके। जैसे कि बोरिंग के लिए उस बंदे को 10 मिनट लगेंगे। तो एक स्टैंडर्डाइज्ड मेथड्स और स्टैंडर्डाइज्ड टाइम लगेंगे, टाइम की एक हम मतलब ये निकाल सकते हैं कि टर्निंग है ना तो टर्निंग के लिए 1 मिनट लगेगा, थ्रेडिंग के लिए 7 मिनट लगेंगे। तो कोई भी बंदा हो तो कोई भी बंदे से 1 मिनट एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम, टर्निंग होनी चाहिए, थ्रेडिंग 7 मिनट में होनी चाहिए, कोई भी बंदा हो। तो उस बंदे को हमें उस तरह से ट्रेन करना है ताकि हमारी मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज हो जाए। ओके, सो थर्ड पॉइंट इज व्हाट, यूटिलाइज स्टॉप वॉच। व्हाई वी आर यूटिलाइजिंग स्टॉप वॉच? टू काउंट डाउन द टाइम रिक्वायर्ड टू make or complete the operation by this skilled person. Okay, then next one is what, fourth step is what, identify and eliminate any unnecessary tasks that are performed to finalize the job. Okay, identify and eliminate means any unnecessary task which has been done by the skilled person, we need to eliminate or we need to ignore this task also, because to increase the productivity we need to eliminate this task. Okay, to decrease the time which is required to execute our job. Okay, then next is what, then identify any improvements or tools or techniques that can be adopted to reduce the time in performing the job. So second one is what, कोई तो ऐसी टेक्निक है क्या, कोई तो मशीन का टूल है कि जिससे मैं टाइम रिड्यूस कर सकता हूँ, कि और कोई टेक्निक है कि जिससे मैं टाइम रिड्यूस कर सकता हूँ। ओके, सो ऐसे टेक्निक्स सर्च करो और उसके ऊपर काम करो कि अगर ये टेक्निक्स मैं अप्लाई करता हूँ तो मेरा टाइम बच जाएगा और मेरा प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगा। दिस इज द फिफ्थ स्टेप। एंड देन सिक्स्थ स्टेप इज व्हाट, एस्टैब्लिश न्यू एंड इन्फॉर्म्ड टाइम्स एंड पे रेट्स फॉर द जॉब। नाउ अब डिपेंडिंग ऑन दिस 4 to 5 स्टेप्स, एस्टैब्लिश न्यू एंड इन्फॉर्म्ड टाइम्स मीन्स व्हाट, अगर मुझे टर्निंग के लिए 1 मिनट लगता है तो टर्निंग का स्टैंडर्ड टाइम हो गया 1 मिनट। मुझे थ्रेडिंग के लिए 5 मिनट लगते हैं तो थ्रेडिंग का स्टैंडर्ड टाइम हो गया 5 मिनट। मुझे अगर बोरिंग करना है तो बोरिंग को अगर मुझे 10 मिनट लगते हैं तो उसका स्टैंडर्ड टाइम कितना हो गया 10 मिनट। उससे ज़्यादा उस एम्प्लॉय ने टाइम लेना नहीं चाहिए। सो मान लो अगर एक प्रोडक्ट मुझे प्रोड्यूस करना है, उस प्रोडक्ट के लिए मान लो अगर मुझे शाफ्ट प्रोड्यूस करना है तो एक शाफ्ट के लिए मुझे अगर 3 घंटे लगते हैं तो 3 घंटे से ज़्यादा का टाइम किसी एम्प्लॉयज़ को नहीं मिलेगा। और 3 घंटे से पहले अगर वो एम्प्लॉय उसका काम कंप्लीट करता है तो उसको जो भी पे आउट है, जो भी सैलरी है वो कंप्लीट सैलरी मिलेगी। और अगर वो 3 घंटे से पहले वो जॉब कंप्लीट नहीं करता तो अकॉर्डिंग टू टाइम ही हैज़ टेकन टू इंक्रीज दिस जॉब, the salary will be deduced. So make this rule and apply this rule to all employees. Then only your productivity will be increased. Okay. So sixth step is what? Establish new and informed times and pay rates for the job. मतलब एक जॉब के लिए अगर एक जॉब निकालना है तो आपके एक जॉब निकालने के लिए आपको 50 रुपये है और उसका टाइम है 10 मिनट। अगर आपको अगर 10 प्रोडक्ट्स का टारगेट है तो उसके हिसाब से आपके रुपीज़ कितने हो गए, 10 into 50 500 और टाइम कितना हो गया 10 into 10 100 मिनट्स हो गए। ओके, ये आपका बन गया टारगेट। अगर ये टारगेट आप कंप्लीट करते हो तो आपको उतना पे आउट मिलेगा, अगर आप ये टारगेट कंप्लीट नहीं करते हो तो आपको उतना पे आउट नहीं मिलेगा। ये स्टैंडर्डाइज रूल्स बनाओ तभी आपका प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो सकती है। द नेक्स्ट स्टेप इज व्हाट, लास्टली all workers are trained to perform the job in the one best way identified. Now last one is what, you should train all these workers in such a way that they will complete their product in a given time. Means what, we need to work out on the workers or employees, means we need to train all the workers in such a way that they will complete their job in a given
time. So we need to expend some time on that workers. We need to train all these workers, then and then only they will complete their job in their time. Otherwise it is not possible. If we have some rules, if we have some established time for the product, but if we don't train or if we don't expend our time on that worker to train in such a way, then it is not possible to increase the productivity of organization. Okay, so these are the 6 to 7 points or 6 to 7 steps which have been explained by the scientist Frederick Taylor to improve the productivity of organization. Okay, so this is the method, how this method is implemented in organization. Actually this Taylor has executed his method or his techniques into organization, and he come to know that by using his techniques the productivity of that organization is increased, and these techniques become a role model for the organization. Okay, so he is known as the founder of management science. So FW, due to his efforts or due to his techniques, he is known as the founder of the management science. Okay, so here up to this we have covered the Frederick scientific method. What was the Frederick scientific method? What was the Frederick F.W. Taylor's scientific approach? Okay, now we will see F.W. Taylor's 4 principles of scientific management. Okay, this topic we will cover in next lecture. Up to this, here we will conclude our lecture here only. Okay, so in this lecture we have covered F.W. Taylor's scientific method. So how we are going to apply this F.W. Taylor's scientific method in our organization, and why we are applying this method? Because if we need to increase the productivity of the organization, we need to apply these 5 steps in the organization. Then and then only it is possible to increase the productivity of your organization. Okay, so here I am concluding this lecture. In next lecture we will see the 4 principles of the F.W. Taylor. Thank you.